balancing ledger, the third sum, let's start. The third sum, again, it's a very easy sum. Let's do it fatafat. ABC Limited maintained his ledger on a self-balancing system. The ledger revealed the debtor balance of 1,08,000. So debtor का balance है अपना 1,08,000 and creditor balance is 1,28,000 on 1/1. That is the 1st January 2015. The following transaction took place during a period of 3 months ending on 31/3/2015. So many transactions given. As I told you, as and when we read the transaction, we'll do its posting. Now what are we supposed to make? Debtor का ledger adjustment बनाना है, creditor का ledger adjustment बनाना है, but in general ledger. In general ledger हमें ये दो चीज़ें बनानी है. मतलब in general ledger, if they ask us to make a debtor ledger and a creditor ledger, मतलब we need to draw the normal सीधा debtor and creditor का ledger जैसे हम entry pass करके बनाते हैं. No change, no variety, ऐसा कुछ नहीं है. Entry बोलेंगे and then फटाफट इसकी posting कर देंगे. Let's begin. बेटा first January opening balance है, तो debtor का opening balance but nothing specified, so it will be on the debit side. The opening balance will go on to the debit side for a debtor. Opening balance 1,08,000, whereas creditor का opening balance है 1,38,000, तो वो creditor में चला जाएगा. Date हम लिख देते हैं 1/1/2015 by opening balance. And the amount is 1,28,000. The opening balance and the amount is 1,28,000. Now once we start reading all the transactions, what we do is कि हर एक वो ledger जो हमको बनाना है, general ledger में, sales ledger, so self balancing में जैसे हमने देखा entries वो debtor ledger adjustment to general ledger ऐसे हम pass करते हैं. So while doing the posting, let's first write 31st March 2015 को ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं. सो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसी हम हेडिंग पहले से ही दे देते हैं. जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसी हम पहले से ही हेडिंग दे देते हैं. राइट. द सेम थिंग वी डू इट ऑन टू द क्रेडिट साइड ऑफ the debtor. The same thing will do it on the debit side of creditors account, right? And यहाँ पर भी हम वो लिख देते हैं. Do you get that? यहाँ पर भी हम वो लिख देते हैं. So once we pass this, एक बार हमने वो heading मार दिया, उसके बाद एक बार हमने हेडिंग मार दिया, उसके बाद सारी चीज़ें हमको ट्रांजैक्शन अपने लिए लिखना एकदम इजी हो जाएगा. यहाँ पर डेट भी हमें लिख देनी है, बिकॉज ऑल ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑन द सेम डेट. ऑल द ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑन द सेम डेट. सो बाय जनरल लेजर हम उसमें लिख दे रहे हैं. ठीक है. Now let's see the first one, credit sales. But what entry do we pass? Individual customers to sales. तो debtor ledger को हम debit करेंगे. So debtor के यहाँ पर हमारा general ledger में वो credit side चला जाएगा. General ledger में मतलब debtor के ledger में it will come on the debit side. Credit sales, the amount is 2,20,000. The amount is 2,20,000. Then cash purchase. The cash purchase entry is purchase account debit to cash. No creditor is involved. So no entry. Put a cross. In your pamphlet, put a cross. Cash purchase will not come. Credit purchase, yes. It will be purchase account debit to creditors. Purchase account debit to creditors. तो यहाँ पर हम लिख देंगे credit purchase. The amount is credit purchase. The amount is 1,32,000. Credit purchase is 1,32,000. Okay. Then next, bills receivable received. So bills receivable received की entry क्या आएगी? Bills receivable account debit to
डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड हमको लिख देना है बिल्स रिसीवेबल, received, and the amount is 1,20,000, amount is 1,20,000. Then bills payable accepted. Now bills payable, the entry what I'll pass is bills payable is creditor account debit to bills payable. So creditor के डेबिट साइड चला जाएगा बिल्स पेबल, क्रेडिटर के डेबिट साइड चला जाएगा बिल्स पेबल 1,08,000, 1,08,000. Then discount allowed. So discount, the entry will be discount account debit to debtors. So discount will decrease my amount to be received from the debtors. So discount allowed 8,000. Discount received, तो creditors to discount received. So creditors को हमने डेबिट कर दिया है, तो creditor to discount received, the amount is 6,000. The amount is 6,000 for the discount received. Then bill receivable dishonored. अब देखो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड बिल्स रिसीवेबल लिखा था जब हमने बिल्स पेबल बना, बिल्स रिसीवेबल हमको जब मिला, अब यही बिल डिसऑनर हो रहा है, सो इट विल कम ऑन द डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल dishonored, bills receivable dishonored 18,000. Then cash paid to creditors, cash we are paying to creditors, cash, so creditors account debit to cash, the amount is 72,000. Then cash received from debtors 88, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cash 88. Then bad debts, the entry is bad debts to debtors, so again it will come on the credit side, bad debts, it will come on to the credit side. Then bad debt recovered, put a star, put a cross, वो नहीं आएगा. Bad debt recovered is cash account debit to bad debts recovered, cash account debit to bad debt recovered, तो debtor creditor कुछ भी नहीं है तो वो नहीं आएगा. नेक्स्ट स्टार करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल रिसीवेबल रिन्यूड स्टार, उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन बिल रिसीवेबल रिन्यूड स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बिल्स रिसीवेबल रिन्यूड का मतलब क्या, कि हमने पहले कुछ एक बिल बनाया होगा, राइट अब उस बिल की जब मेच्योरिटी डेट आई तब हमारे डेटर ने हमें रिक्वेस्ट किया होगा कि आपने ये जो बिल बनाया है आप प्लीज उसे कैंसिल कर दीजिए, मेक अ न्यू बिल. तो आई वुड से व्हाई विल आई मेक अ न्यू बिल, so my debtor will say I'll give you extra money, I'll give you interest, so that is that interest on the bills receivable which I'll renew for him. So what we need to do whenever there is a renewal of bills receivable, पहले क्या होगा कि पहले पुराना बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे एंड देन हम एक नया बिल बनाएंगे जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा. I'll include in that new bill the amount of bill as well as the interest which is to be received. So how will I pass the entry beta, it's most important. सबसे पहला रिन्यूअल हुआ है तो पहले बिल कैंसिल करना पड़ेगा. अब बिल कैंसिल करने का मतलब जब बिल बनाया था तब हमने डेटर के क्रेडिट साइड लिखा था, अब कैंसिल कर रहे हैं तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा. लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल कैंसल्ड, वो बोले नहीं है लेकिन हमको समझने की बात है कि हमको पहले वो कैंसिल करना ही पड़ेगा तो ही तो नया बिल बनेगा. इसलिए मैं इसको बेटा आई एम राइटिंग इट इन अ डिफरेंट कलर, इट्स इंपॉर्टेंट. बिल रिसीवेबल कैंसल्ड, फिर हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वी हैव सीन द एंट्री आल्सो, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूड बिल्स, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूड बिल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 4,000, इसको भी हम रेड कलर कर दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम पहले बिल कैंसिल करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे डेटर पे, फिर नया बिल बनाएंगे. सो नया बिल जो बनेगा वो यहाँ पर अगेन इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड,
new bill receivable, and the amount will be 72,000. That is 68,000 पुराने बिल की अमाउंट प्लस 4,000 का इंटरेस्ट, वो दोनों ऐड करके हम नया बिल बना रहे हैं। वो दोनों ऐड करके हम नया बिल बना रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वी कैंसल द प्रीवियस बिल, मेक अ न्यू बिल along with the interest. So this is how you need to do the posting. This is how you need to do the posting. Cancel bill will come on the debit side. Interest, debtor से मुझे लेना है तो debtors account debit to interest, and then we make a new bill along with the old bill plus the interest amount. So that is how 72 will come. The next provision for discount on debtors put across, वो नहीं जाता है, कहीं पर भी नहीं जाएगा। provision for discount on creditors. Then bill receivable received, now honored, मतलब बिल रिसीवेबल का हमने पैसा दे दिया, सो हमारी एंट्री आएगी, हमको एंट्री ऐसी आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दे आर ऑल ऑनर्ड. So again that will not be coming in my debtor or as well as in my creditors ledger. So that completes our entire sum. बेटा मुझे डेबिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है डेटर्स में, डेबिट का मुझे टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो हम टोटल करते हैं। चलो लेट्स डू द टोटलिंग ऑफ द डेबिट साइड, दैट इज 4,18,000। वही टोटल हम क्रेडिट में लिख देंगे, 4,18,000, एंड देन इसमें से हम 1 by 1 सारी चीज़ें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 by 1 we would subtract all the items. तो 127,200 कुछ अमाउंट में गलती करी है क्या? अमाउंट में गलती करी है क्या? ओ यस, बैड डेट की अमाउंट है 10, मैंने बैड डेट रिकवर्ड की अमाउंट लिख दी है। So 1,20,000, I got that beta, I got that 1,20,000. So this is by balance carried down 1,20,000, bad debt recovered की अमाउंट लिख दी यार। कोई टेंशन ना, तुमने तो मतलब अच्छी तरह से पकड़ लेना है, कोई टेंशन नहीं। तो ये क्लोजिंग बैलेंस मेरे डेटर का आ गया, जबरदस्त जबरदस्त। नाउ लेट्स डू द टोटलिंग फॉर द क्रेडिटर्स। अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आने वाला है इसमें। विल गेट द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ज़्यादा, अपना क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, कर लेते हैं। चलो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,60,000. The total of the credit side is 2,60,000. So यहाँ पर भी हम वो 2,60,000 लिख देंगे, टोटल के कॉलम में 2,60,000, and then I'll get my closing balance. I'll get my closing balance 74,000. yes, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं to balance carried down 74,000. The date is 31st. oh तो वो तो ऊपर लिख दिए यार। The date is 31st, and that is how we got the answer of the closing balance for the third sum. This is how the third sum is over. We got the balance 1,20,000 and 74. After completing the third, let's go on to the sixth sum, which is a bit easy and we'll able to finish it off also in quick time. So we go ahead with the sixth one. Let's start reading the sum. From the following particulars which have been extracted from the book of Nitic Company for the year ending on 31/3/2015, prepare a sales ledger adjustment account
as it if appear in the general ledger. So general ledger में sales ledger बनाना है, मतलब you have to make a debtor ledger, सीधा सीधा ही बना देना है general ledger में. अब यहाँ पर थोड़े important points आने वाले हैं. So what I do is I'll give you time to make the format. फटाफट ज़रा format बना लेंगे, फटाफट ज़रा format हम बना लेंगे. In general ledger we have the sales or the debtor ledger, और ये सारे ट्रांजैक्शन अपीयर हो रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3. तो ओपनिंग बैलेंस विल बी फ्रॉम 1st April 2014. 1st April 2014. Now you could have paused the video and made the format. Let's start reading the sum. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सेल्स लेजर. ओपनिंग बैलेंस डेबिट का भी दिया है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का भी दिया है. नाउ डेटर का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस मींस डेटर का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस. डेबिट का मतलब हमें तो उनसे पैसे लेने ही हैं, लेकिन क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस मींस वी हैव टेकन सम एडवांस फ्रॉम देम, इसलिए क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है. एंड द डेट वी पुट 1/1/2014. 1/1 नहीं, 1/4 सॉरी, 1/4/2014. विल राइट टू ओपनिंग बैलेंस, जो हमको पैसा मिलना चाहिए था. नीचे ब्रैकेट में वो लिख दे रहा हूँ मैं तुमको, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स. ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स जो हमको मिलना चाहिए था 362,048, ये हमको पैसे मिलने चाहिए थे. ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है. लेकिन क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस इट विल इंडिकेट कि हमें एडवांस मिला है. वी गॉट एडवांस फ्रॉम आवर कस्टमर. सो बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एडवांस रिसीव्ड. एडवांस्ड रिसीव्ड द अमाउंट इज 1248. ज़्यादा नहीं है, लेकिन the things are there, and I'll highlight this to a different color because ये opening and closing कैसे पता चलेगा वो अभी हमको देखना पड़ेगा. So opening we have on the debit side the due which is to be received, and the credit indicates we have received some amount as an advance. Then provision for bad debt and doubtful debts put across, कहीं नहीं जाएगा. Put across, provisions will not go anywhere. Then sales for the period, CR is credit and नीचे cash दिया है. So cash का क्या करना है वो देखते हैं, लेकिन हम पहले वो अपना main heading लिख दें to general ledger adjustment account, and यहाँ हम लिख देते हैं by general ledger adjustment account. हमने पहले हेडिंग लिख दिया, अब फिर सारे ट्रांजैक्शन अपने फटाफट लिखना इजी हो जाएगा. नेक्स्ट अब देखते हो क्रेडिट सेल्स, तो डेटर्स टू सेल्स. सो क्रेडिट सेल्स विल कम ऑन टू द डेबिट साइड. क्रेडिट सेल्स 10 lakh 5,248. 10 lakh 5,248. Cash sales will not come. Then amount received from debtors, तो cash to debtors, तो credit side जाएगा 1249720. Then the bills which are accepted by the customers, so it will be bills receivable to debtors. So bills receivable accepted. Bills receivable accepted 10,000. Then check dishonored 10160. Check dishonored, तो जो हमको पैसे मिले थे, चेक मिला था, वो डिसऑनर हो गया. So now again I have to receive the amount from my debtor 10160. तो उसकी एंट्री है डेटर्स टू बैंक. चेक जो डिसऑनर होगा डेटर्स टू बैंक.
Then bad debts written off. Bad debts to debtor 2048. It will come on the credit side. Bad debts, it will come on to the credit side 2048. Bad debts 2048. Then interest on overdue account, that is interest I charge from the debtors, so debtors to interest, so it will come on to the debit side, interest on overdue accounts, interest on overdue accounts 656. Then cash discount allowed, so that will come on the credit side, discount allowed 12216. 12216. Bad debts previously written off now recovered. Bad debts previously written off now recovered. Put across. The entry is cash account debit to bad debts recovered. Put across. कहीं नहीं जाएगा. Then return from customers is my sales return. तो sales अगर debit side है तो sales return will come on the credit side. Sales return will come on the credit side 5808. 5808. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Okay, sales return 5808. Then bill accepted by customers matured, मतलब हमको वो बिल का पैसा मिल गया, bill got matured and we got the amount, so it will be cash account debit to bills receivable. तो उसकी 4000 की भी एंट्री कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी. आर यू गेटिंग दैट? कि उसका हमको पैसा कहीं नहीं लिखना है. बिल्स पेबल जो मैच्योर हो गया है, यस. अब इसको स्टार कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अ कस्टमर हैज रिटर्न द गुड्स ऑफ द सेल्स वैल्यू 1200, मतलब कस्टमर ने सामान आके हमको वापस दे दिया 1200 के. फॉर विच फ्रेश गुड्स हमने उसको दे दिए. बराबर है, मतलब कस्टमर हमारे पास 1200 का सामान लेके आया, हमने उसको उसके सामने नए गुड्स दे दिए. अब थ्रू अ क्रेडिट नोट वाज इश्यूड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स, मतलब जब उसने रिटर्न किए गुड्स तो अब हमने उसके क्रेडिट नोट दे दी, मतलब वो ट्रांजैक्शन उसी वक्त खत्म हो गया. डबल एंट्री के हिसाब से डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दे दी. कस्टमर ने जैसे ही हमको सामान रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न किया, तो हमारी एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. तो डेटर को मैंने क्रेडिट किया, मतलब मैं उसको क्रेडिट नोट दूंगा, तो मैंने उसको क्रेडिट नोट दे दी, तो उस ट्रांजैक्शन की डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हो गई खत्म. लेकिन हमने क्या किया, उस सामान को जो वो रिटर्न कर रहा है उसके सामने उसको नए गुड्स भी दिए हैं. लेकिन उसके लिए क्या किया है, अंडरलाइन करो. द न्यू गुड्स, द सेल इनवॉइस वाज इनएडवर्टरली नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब गलती से जो सामान उसको दिया नया फ्रेश, उसका हमने अभी तक बिल नहीं बनाया है, तो उसका बिल बनाना पड़ेगा. जो उसने सेल्स रिटर्न किया और उसके लिए जो उसको हमें क्रेडिट नोट देना चाहिए. क्रेडिट नोट क्यों, आई अगेन रिपीट द एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. हम डेटर्स को क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न के वक्त हम उसे क्रेडिट नोट देंगे. तो सामान रिटर्न हुआ, सामान आया, क्रेडिट नोट गया, उसकी टू फोल्ड इफेक्ट हमने दे दी. लेकिन उसके बाद हमने उसको फ्रेश गुड्स भी इश्यू किए, फ्रेश सामान भी दिया. अब जो फ्रेश सामान दिया, क्या लिखा है, इनएडवर्टेंटली हमने वो बिल नहीं बनाया, मतलब गलती से हमारा वो बिल नहीं बना है. तो सामान अगर जो हमने दिया तो इज द रिसीवर, डेटर, व्हाट गोज आउट, गुड्स. तो अगेन इट्स अ क्रेडिट सेल्स विच विल कम ऑन द डेबिट साइड टू, सॉरी क्रेडिट सेल्स लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, फॉर गुड्स which were returned. For goods which were returned, and हम इसको रेड कर दे रहे हैं, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देना है. and 1200 is the amount, we need to mark that also important, 1200 rupees. With that all transactions dealt, all transactions dealt. अब मुझे डेबिट साइड जो 3 लाख की अमाउंट दिख रही है, उससे मुझे
डेबिट का ही टोटल ज़्यादा लग रहा है मुझे, डेबिट का ही टोटल ज़्यादा लग रहा है. The total of the debit side is definitely on a higher side. तो उसका हम टोटल करते हैं, चलो उसका हम टोटल करते हैं, चलो 1379312. यस, जो सम किया हुआ है सॉल्व मैंने उसमें भी सेम टोटल आ रहा था, इसमें दोबारा जब सम सॉल्व किया तब भी सेम टोटल आ रहा है 1379312. इस टोटल में से बैलेंस अगर ढूंढना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 1248 124972, फिर 10,000, फिर 2048, फिर ये 98272. या that's my closing balance. That's my closing balance. और नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं it is due from customers. ये हमारा ड्यू है फ्रॉम कस्टमर्स बिकॉज वी नीड टू राइट इट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दोनों साइड था, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो कौन सा है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है. तो इट्स द क्लोजिंग बैलेंस, इट्स अ ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, द अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव्ड 98272. बेटा दैट्स ऑल, वी कंप्लीटेड द टू सम्स. आई रिक्वेस्ट ये दोनों ही सम खत्म कर देना. ओके